we are having more export than import, so service will be in positive. Yes, sir. Yes, sir. If you talk about this primary income, where we are talking about WIPR, that will be positive or negative? Negative. Negative. Why negative? Because of this capital account जो FDI FPI मानू आमे नहीं आसुजे तांकु जो इंटरेस्ट ता दबो सेटा तो इथरे आस जिवो. Yes, sir. सेटा तम देशरु बाहर की पळेबो, राइट? So negative. Then secondary, that will be positive, correct? No, because the remittance gift India तो काहाको देइनी दिए की बाहर वरु आसे पैसा इंडिया को ग्रांट्स वगैरह बहुत कम केसेस हुए जोतरे इंडिया बाहर को दिए. ओके, एनीवे, so if you calculate all total, so these positive and this positive is not that sufficient positive कि तमे नेग्लेक्ट कर दे परबे नेगेटिव को. तो ए नेगेटिव फॉर एग्जांपल एठी होची -100, एठी होची +50, एठी होची -25 एंड एठी भाबिना +10. तो ये 50 10 60 पॉजिटिव रहला को नेगेटिव केते -125. So ultimately तमर टोटल केते हला -65. माइनस मींस डेफिसिट, 65 मींस टोटल 65 लाख करोड़ रो भाबिना डेफिसिट होची, नॉट लाख करोड़. सम लेट सपोज 65 करोड़ रो डेफिसिट होंगे नहीं. Okay. Now coming to the question, with reference to the current account deficit CAD, consider the following statements. तो से कौन कहूची कि a high current account deficit leads to the depreciation of the domestic currency. जदि तमरा high current account deficit हैला, high current account deficit केतेले हबो? जेतेले तमरा Import sir आयो. import अधिक है जो import अधिक माने ता माने तमरा पैसा पळेला. Yes, sir. करेक्ट न? तो तमे import अधिक करूछ ना, that means बाहर को तमे पैसा दउछ एंड बाहर वर्तमान तमरा कोन पाको आसुची प्रोडक्ट आसुची हों कि नहीं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then let's see the second question. Ease of overseas borrowing norms for the private sector can lead to decline in CAD level. What do you think about these two? See, मु just कहली current account deficit 10 ता सहित तमे ट्राई करो एटा देखिया पई कि domestic currency रो depreciation, how it leads to domestic currency रो depreciation if you are having a high current account deficit. Anyone? Can anyone relate? Whether Sir, option 1 is correct. One is The correct. two पे wrong होगा. Okay, two कथा देखिए. First one कथा को. One टा correct. So one One is टा correct, correct sir. होगा sir. काहेंगे? Sir, import Sir. अधिक होला. Okay. तो sir डॉलर the currency India रो sir flow करियो outside. Sir, तो Sir. sir डॉलर outside flow कला कारण international transaction sir डॉलर हुए. तो sir डॉलर outside flow कले तो इंडिया रे कमियो डॉलर नीड बढ़ियो. तो ताकू सर नीड बढ़िले तो सर रुपी रे वैल्यू कमी होते. Right. Sir. So you are saying CAD is increasing, that means import is increasing, and import is increasing means तमे अधिक रु अधिक डॉलर देकी बर्तन जिंस किनिबो, करेक्ट नो? Yes sir. तो तम मार्केट रे डॉलर रो टोटल सप्लाई कमिबो. Yes sir. एक्सपोर्ट दिले डॉलर रो सप्लाई बढ़ी थांदा, काहेकि ना जे तम देश रु किनिबो से तमु डॉलर देई थांदा, करेक्ट नो? बर्तन तमे इंपोर्ट करियो, फॉर एग्जांपल आमे जदी बर्तन ऑयल रो इंपोर्ट को बढ़ेबो ता माने हमकु अधिक रु अधिक डॉलर रे ट्रांजैक्शन करियो पड़ियो. आम देश रो डॉलर नेकी बाहर दबाव पड़ियो. देशर डॉलर नेकी तमु डॉलर दबो ना. तो डॉलर तमे देई देला, आगुर 100 टा डॉलर थिला, बर्तन अबिनो इंपोर्ट पई तमे 50 डॉलर देई देला, बर्तन आ रहिला केते 50 डॉलर. तो 50 डॉलर जदी रहिला त माने डॉलर रो सप्लाई कमिला, डॉलर रो वैल्यू बढ़िबो. डॉलर रो वैल्यू बढ़ियो माने मनी रो वैल्यू कमिबो. दैट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, डोमेस्टिक करेंसी. Yes, sir. Yes sir. Okay, what about the second? Anyone else having some other arguments for option 1? हेलो सर. सर जदि हम एमती देखिबा कि जदि करंट अकाउंट डेफिसिट जदि कमिला बढ़िला ता माने इंपोर्ट बढ़िला
जदि इंपोर्ट बढ़िला ताहले तार मनी रो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू रो करेंसी डेप्रिसिएशन हला द केमिति वैल्यू हला? टा करिला कम सेटा ये केमिति सर हला? सर जदि इंपोर्ट जदि बढ़िबो ताहले मनी रो वैल्यू टा कमी जिवो ना माने सेटा रिपी रो statement वैल्यू टा दिया। कमी जिवो मैम सेटा ही स्टेटमेंट जदि दीजी ना। हां सर जदि कमिला तो ताहले जिमते बे चाइना कोची सर इज ऑफ डूइंग बिजनेस टा सर ताहले मु भाबुची कि माने एफडीआई फ्लो टा अधिक हबो No, काना ma'am. हमर First, मनी रो वैल्यू कमी let me जाईची correct you, ma'am. Yeah, ma'am. That is fine. Whatever your understanding is, it will be proper. What I'm saying is, with respect to option one, what is your argument that this is correct? Why it is correct? My question is why. Not because you are saying like okay, current account deficit of the body la, tale money value komila. So that is the statement given, right? यस सर सर से लिखि Sir, अगेन actually, इट विल लीड टू डिक्लाइन इन सीएडी लेवल ता माने करंट अकाउंट डेफिसिट टा कमी जिवो सेटा ना सर It will lead to decline, huh? यस सर सर इज But ऑफ set ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କହୁଛନ୍ତି କି? यस सर ନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ପଚାରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବଢିଲା, ଡଲାର ବାହାରକୁ ଗଲା, ଡଲାର ସପ୍ଲାଏ କମିଲା, ଡଲାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ମନି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଲା। सॉरी ୟା ବ୍ୟତୀତ ତାର କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅଛି କି? नो सर Fine. Then go to the second one. Ease of overseas borrowing from the private sector can lead to decline in CAD level in India. maybe may not be ହେଇପାରିବ। Okay. What about others? correct. one ଟା ଖାଲି correct ହବ। सब सर हबनी माने डिक्लाइन आसीबनी हाँ। सेटा सीडी लेवल रु इंक्रीज एक्चुअली बिकॉज़ अपन जदी एठी माने देखिबे बोरोइंग पार्ट ता रहउची इज ऑफ ओवरसीज बोरोइंग ता माने मु काठू बोरो करूची अदर कंट्री रु डेफिनेटली आई नीड टू पे बैक तो मते मो करेंसी रो मते दबार अछि सो मोर जहां भी करंट अकाउंट रे मोर बैलेंस अछि सो आई एम डिप्राइविंग ऑफ दैट तो सेटा अगेन इट वुड See, इंक्रीज correct. So I will suggest this type of question won't come in UPSC. Why? Because this has a positive as well as the negative side. Means it can be Yes, true, sir. it cannot be true. Why I'm saying? सर जदी ओवरसीइंग बोरोइंग हैला जदी एफडीए आसिला देन हमर प्रोडक्शन ने मनकर कोनोसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैला लगेला से मनकर एफडीए बोरोइंग द्वारा देन अधिक हमर खर्च एक्सपोर्ट रेजिम हबो? एमे एक्सपोर्ट भी करि परिबा मैं Correct. कहीं तो एक्सपोर्ट export न भी करि बढ़िबो। परिबा यस सर Export बढ़िबो। मे और मे But नॉट बी but again से export रे भी condition आसी जाय पारे कि trade tariff वगैरह, right? यस सर यस सर यस So सेटा see, दूसरा सेटा that's why this is not a UPSC based question. Okay, that's the first thing. So if तापरे this सर से एक्सपोर्ट रे भी से भली किछि नाही जे माने हमें एक्सपोर्ट रे सक्सेसफुल हेई कि पुणी से डेफिशिएंसी टाको ओवरकम करि परथवा दैट इज आल्सो नॉट गारंटेड तो माने समहाउ हमकु तो बरो पार्ट अछि माने हमकु केमिति बेले पे बैक करिया को पड़िबो ही पड़िबो हमें फ्री लोन भी नहीं परिबा ना हमें वर्ल्ड बैंक रु नहीं परिबा फ्री रे जदी गोटे Correct. लिस्ट डेवलप कंट्री अछि एलआईसी कंट्री अछि से तो नहीं परिबा फ्री रे लोन हम किंतु तार अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन थिबो जोडे की फुली सैटिस्फाई हो नथु सो अगेन दैट इज इन द डायलेमा स्टेट की अगेन प्रोबेबिलिटी पार्ट वेदर इट वुड बी और इट यस वोंट यस बी यस सो So यस यस सेथिबे तो here एटा for me you can go for one or you can go for both 1 and 2 based upon your thinking. Okay, but at least you should be very clear with the concept. जो concept हम discussion करले कि हाँ कि जदी FDI, see why we are allowing FDI, because we need to increase our infrastructure. Why we want to increase our infrastructure? Because we want to give employment. Why employment? Because there is a demand for the production, and जदी production अधिक होला we will go for the export. Correct? No. Yes. So Yes, sir. जदी मे भी हे पारे जदी तुम एफडीआई को अलाउ करलो ताल तुमर एक्सपोर्ट भी बढ़ी जिवो जदी एक्सपोर्ट बढ़ी जिवो तुमर करंट अकाउंट डेफिसिट कोन हो कमिबो कमी जिवो राइट सो देयर विल बी डिक्लाइन इन सीएडी यस
it is one option, like one way. The other way, जदि तमे अधिक रु अधिक FDI आनलो, then तमरो जो invisible component, तारा जो interest, dividend, correct, profit, Yes, sir. सेटा तम बाहर को जीवो, right? जेहेतु बाहर को जीवो, invisible component that will become negative, and because of that your current account deficit will also increase. Yes. Correct? So on based upon that, that is basically the conclusion. So now option 1 is definitely correct. Option 2, it can be correct or it cannot be correct. Okay, fine. Sir, ताले answer कौन होगा? One. See, even UPSC question रा भी answer से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जोटा बार दियोंदी ना, सेटा भी जेतले गोटे वर्षर एग्जाम सरला पर नेक्स्ट ईयर आंसर आसे डिस्क्रिपेंसी आसे, तो तमे केबे 100% कहि परिबे कि मोर कोचिंग इंस्टीट्यूट रा कैलकुलेशन में मोर 78 आसुची या फिर 89 आसुची या फिर 90, that might vary. होंगे नहीं. See, Okay. that means coaching institute properly करबे ना, because see, these are not like a physics question or math question कि formula put कलो final तुमको answer मिलियो, because this has many dimensions, right? No, and that's why even the Yes. chat GPT also failed 33%, that भी कम रहला. Okay, because there are a lot of analysis has to be done. So what my suggestion is, you see the question, do the analysis, and just check whether your analysis is proper or not, whether you are able to analyze the question or not, or whether you are able to analyze the statement or not. Now, if you able to analyze the both the way, right, कि CAD can increase or CAD can decrease based upon the understanding, that means your understanding is proper. सर एक्चुअली एमिति क्वेश्चन आसिले माने Grace mark ऑप्शन मिलियो ना? हां ग्रेस मार्क जोटा कि इवैल्यूएट हबनी तो This जोटा will go for बेस्ट challenge. अप्रोप्रिएट लागियो सेति की करे कि विथ लक आसीबा कथा आउ तार किछि ऑप्शन नाही. Correct. This will get Sir. challenged, right? Sir, I guess the question already has a possibility in its option, because the word can, it comes with possibility. So when it is mentioned like can lead to, we can always take it as a possibility and mark it as both 1 and 2. If the word can would have been omitted, the sector lead to a decline, then that would have been a confusion. But the word can itself comes with possibility. Exactly. So that's also a very good point. I actually didn't notice this. Okay. So there is a word called can lead to. Okay. So 2015-16 forward to the tame dekhiyo na, there are people who will focus on this type of words, right? Ki can jodi thibo extreme word, it is not extreme word. Correct. There are some shortcuts. Ki ago khojo ki statement padhiya darkar nahi. You don't know what is CAD. Okay. You know there is a word called can, which is not extreme word. Mark it as correct. Both 1 and 2. Okay, there are people also they do. Yeah. So yeah, I will also go with you, ma'am. Basically, you told about this can lead to, right? That means okay, there is a possibility that there will be a possibility that we already saw, that decline of CAD. So in that case, yeah, you are true, ma'am. Both 1 and 2 can be the answer. Again, I am saying can be the answer. Fine. Yes. Okay. But our understanding is proper, right? We try to analyze both the way. Okay. Now let it to them how they interpret. Okay. Because in law, right, there is no single answer. Excuse me, ma'am. Sorry, I'm getting a background noise. Give me a second. Okay, this happens. Okay. Next question. 59. Which one of the following statement best describe hot currency? See, hot currency is related to again balance of payment. Correct? No, FDI, API. API. Yes, sir. Okay. FPI. Now, if you see hot currency, a currency that is easily available in an economy in its forex market, a currency that exists an economy at a very fast pace, that exit. A currency that is seen as politically and economical stable, a domestic currency that is depreciating rapidly. See, domestic currency means this is not related to API, right? We talked about API, semane aniki paisa asbe and hothat kina neiki palebe. Because of US quantitative easing, they will bring the money. Because of US Fed tapering, they will take away the money, correct? Or there might be some other reason also. For example, gote thara Turkey re bi issue astila, joti ki tanku lagila ki market down hi pare pura Central Asia vagara sabu kichi, tenu sane exit kar dele market. So this is related to exit, a currency that exists an economy at a very fast pace. Bujhela? There is nothing hard question about it, correct? No, I think it might be a question from UPSC. I'm not exactly sure.
Okay, but this kind of question you can expect in the exam. That's what my point is. It is clear, right? Sir, hot currency related to FDI, FPI. API, no, API, not FDI, API. Yes, sir. Yes, sir. FPI. Yes, sir. We already talked about hot money, right? So that is hot currency. Yes, sir. Next, REER and NEER. Mane paduchi SDR concept. REER badhila, NEER and REER. REER is related to what? There is nominal and there is real. Real means it is always try to balance with the inflation. Nominal means it is the market price. Correct? No, GDP re bhi hame kotha hogile na, GDP at nominal and real GDP. Real GDP calculation based upon the year 2011 data. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, question is with reference to the real effective exchange rate. This is UPSC question. Okay. Real effective exchange rate REER. Consider the following statement. REER is the nominal effective exchange rate adjusted for the price inflation. Okay. Then the value of REER declines as the domestic currency devaluates. An increase in the economy's REER indicates that its export are becoming cheaper. See, we try to take the value 100, right? 100 ru pachuku jodi asila, that means money ra value decrease hela, correct? No, 100 ru upur ku jodi gala, money ra value increase hela, money ra value increase hela. That means what? Dollar value decrease hela. Yes, sir. So dollar ra value decrease hela. $1 equal to 50 thila, ବର୍ତ୍ତମାନ $1 equal to 30 habo. लोक import करिवे ना export करिवे? Import करिवे, right? So if you see the third option, an increase in country's REER. Let's suppose REER thila 100, increase है कि 120 हे गला. That means money रा value बढ़िला. See गोटे थिला ना muscle वाला देखौतिला. एपटे गोटे मोटा हाथ थिला, एपटे गोटे पतला हाथ थिला. Correct no? मने पड़ुछि से diagram, से photo. That's why this you don't have to understand all the concept. If you able to recollect those PPTs diagram, REER वाला diagram गोटे थिला. 100 गोटे midpoint थिला. एपटे गोटे मोटा हाथ गोटे बाहु वाला थिला, एपटे राइट लेफ्ट साइड रे गोटे नॉर्मल गोटे थिला, राइट? पतला गोटे अपपृष्ठी वाला. Okay, so money बढ़िबो, correct no? That means we are talking about in our currency. So money जदी बढ़िला, that means dollar कमिला, and जदी dollar कमिला, $1 equal to 50 थिला, dollar value हेगला $1 equal to 30. So whenever the dollar value decreases, that means there will be more import, so importer will be happy. Yes. Yes, sir. एटी एक्सपोर्ट कोठी ताले cheaper हबो, import cheaper, right? आगरु 50 टका गोटे जिंस इंपोर्ट करथला, बर्तन 30 टका इंपोर्ट करछ. ता माने ऑप्शन 3 इज रॉन्ग. 3 काटी दियो. Done. And I told real आसीबा माने nominal effective rate adjusted for price inflation. मु कोन कहतरी real आसीबा माने तमे प्राइस सहित इन्फ्लेशन को मैनेज करके चलछ, करेक्ट नो? मने पका मु तम गोटे कहतली रियल इंटरेस्ट रेट and nominal interest rate. 100 टंकार गोटे बॉन्ड तमे किनिछ. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, 100 टंकार तमे गोटे बॉन्ड किनिछ. से बॉन्ड रे से कहूची 8% दोची कोन इंटरेस्ट, या फिर भाबिनो तमे मार्केट नॉट 100 टका मु नै जाउ गोटे क्वेश्चन. 100 टका तमे सेविंग करछ, सेविंग बैंक अकाउंट रे इंटरेस्ट केते? 5 टका, राइट? या फिर 4 टका 5 टका, somewhere around that, correct no? This is the interest rate. Is it real interest rate? This is called nominal interest rate. कोन? Because एटा मार्केट प्राइस सहित अछि इंटरेस्ट रेट ता कि 100 टका तमको 5 टका मिलिबो, वर्तमान टाइम रे 5 टका मिलुची, करेक्ट नो? जदि तमको रियल इंटरेस्ट जानियार अछि, देन कैलकुलेट द इन्फ्लेशन. लेट्स सपोज इन्फ्लेशन इज 6%, ता माने तमरो रियल इंटरेस्ट रेट केते? -1. दैट मींस तमे लॉस रे अछ, इवन द प्रॉफिट भी पाउनो. जदि एठी 5 थांदा, जदि इन्फ्लेशन 5 थांदा, ताले जो 100 टका तमे रखिछ वर्षे, से 100 टंकार वैल्यू भी वर्तमान 105 टंकार वैल्यू भी होची 100 टका. बुझियला ना? बुझियला नहीं? मार्केट रे इन्फ्लेशन हे ना, परचेजिंग पावर माने बगा परचेजिंग पावर को कथा को इन्फ्लेशन तमु चेक करियार अछि. रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट या सब को चेक करिया कोले तमु कोन चेक करिया पड़ियो? परचेजिंग पावर. हां कि नहीं? Yes, sir. सेटा को हमें केमति देखिले? फॉर एग्जांपल यू हैव 100 रुपीस, करेक्ट? ओनियन रा पर केजी ओनियन रा वैल्यू अछि 20 टका. केते केजी तमे किनि परियो? परचेजिंग पावर तमर केते हबो? 5, करेक्ट नो? पर 100 टंकाटा तमे बैंक रे रखितलो, से 105 टका हे गला.
वर्षे पर 5% इंटरेस्ट बट ओनियन केजी 20 टका 25 टका हेगला बर्तमान तुम केते केजी ओनियन किनि परिबो 4 पॉइंट समथिंग राइट 25 टका को 100 4.2 4 केजी 200 ग्राम ता माने तमरो परचेजिंग पावर कमी गला Yes, sir. परचेजिंग पावर कमी गला दैट मींस व्हाट इन्फ्लेशन हे गला केते परसेंट इन्फ्लेशन हला ना जदि तमे एठी 5 केजी किनि तांद 25 50 125 हेता राइट जोटी तमे आगु 100 टका किनले तो बर्तमान इन्फ्लेशन केते गला 25% किंतु तुमको इंटरेस्ट मिलु 5% दैट मींस तमरो जो रियल इंटरेस्ट होती -20 Yes, sir. correct no so real means that Yes, has sir. to be balanced with the inflation nominal means whatever is present in the market price hope it is clear right Yes. Yes. yeah see I used to take little time but why I used to take is because I used to discuss the other possibilities जोड़ा आसीबो for example real कोन nominal कोन सेतन के टाइम होची नहले ठीक अछि 60 real done correct no anyway go to next question 61 with reference to Indian economy after 1991 economy see this was UPSC question okay you can expect such type of question see ए सब question ना बेसिक से माने एमिति याडो साडो question तैयार करिले जोतरे अधिक से माने question wrong habo correct no and if you talk about OPSC if they are saying that okay we will make the question related to as like UPSC so what is the way I gave basically you have to analyze each and every option of previous year UPSC questions and what they will do they will create one question how many statements are correct there will be 4 statements and those 4 statements either those were correct or those were wrong previously right मु कहू आ कोन 100 टा क्वेश्चन ए बळिया भी आसीबो कि 100 टा भी क्वेश्चन आसीबो मु कहू एट लीस्ट 20 25 टा क्वेश्चन तो ए बळिया ही आसीबो तो दिसे मान क्वेश्चन बनेबे आ जदी तमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देते तो एक्सपेक्ट करो कि 25 टा क्वेश्चन ए बळिया तमर आसीबो ओके Okay, sir. fine so I can see some signs are coming symbols Rinki ma'am so can you please see whether you are actually accessing the class or someone else okay chalo the next one is related to 61 with reference to the Indian economy after what it is saying after 1991 economy LPG liberalization privatization and globalization consider the following statement. The share of manufacturing sector in gross domestic product saw a consistent rise again 2015-16 YouTube रे जदी चेक करियो से माने कोन consistent rise this cannot be true so option 1 is wrong because Yes, sir. एमिति तो केबे होनी consistent rise see GTB means it can go up down so जदी थरे डाउन असला माने ता माने राइज हेलानी से and it is consistent rise माने से पूरा ऊपर को उठी जाया कथा so the word consistent Yes, is sir. extreme word option 1 is wrong 1 चली गला answer will be 2 बुझियो you don't have to understand Yes, sir. economics to answer the Yes, type of sir. question तो Yes, sir. तांको माने ही से आचरण खुचोदी बट यूपीएससी रे चली जाई करेक्ट नो से सब जो लॉजिक Sir, D. सॉरी Sir, option D टे 2 अच्छी okay option D okay then 50-50 we will see the next word whether we will find you don't what I am saying is you don't have to see कि तुमको for example you don't have to know what is gross domestic product जदी भाबिनो एठी 2 न थांदा एठी 1 थांदा then you don't have to know what is the you don't have to know what is GDP just see first find okay consistent see I am actually discouraging you not to use this okay because sometimes it is beneficial sometimes it is not for example don't use this trick in case of polity maximum question you will go in negative for example money bill will be introduced only at Lok Sabha sir there is a word called only which is extreme word extreme means wrong don't know minus 0.67 होंगे नहीं Yes, sir. so first try to understand the question but now if you see the recent trend these options are also not coming right only 1 pair correct 2 pair correct 3 pair correct or 4 pair correct so you don't know which pair is correct unless until you have sufficient knowledge on that so these tricks won't apply there correct
yeah, but up to certain extent, okay, this is also fine कि consistent जति तमे normal sense of देखो सी जोठी तमे क्वेश्चन आउ बुझी परियो ना, फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन तमे देखलो जेटा आउ जणा भी पडुनी कोन कहउची, तो ट्राई करो एग्जामिनर रो माइंड को पढिया पे आउ तो तमे आउ कोन तमु से टिके बही दबो कि पढिया पे, बही तो दबोनी ना। See, this is how these tricks are made. Basically, let's suppose there is two statement. Okay, so GDP is calculated at consumer price index through consumer price. माने मु कोन कहया होतो कि through CPI I can calculate GDP, or GDP can be calculated through CPI. GDP can be calculated through WPI. GDP can be calculated through, let's suppose, PPI. Okay. Or GDP can be calculated through SPI. Out of 4 statement, how many are correct? कौन करि परियो एठी तमे जति तमे जानि नो किछि करि परियो, किछि हाथ भी मारि परियो तमे ना। CPI जानि नो जति, WPI जानि नो जति, SPI जति जानि नो, देन आउट कोन थला PPI, करेक्ट नो? Yes, sir. कष्ट है जो राइट कि इन्फ्लेशन रिलेटेड किछि ओडे क्वेश्चन पचाला तो जनरली कोन होय से माने फॉर एग्जांपल 4टा स्टेटमेंट अछि एंड सेथिरु 2टा स्टेटमेंट देछि GDP रिलेटेड, आउ गोटे स्टेटमेंट आउ 2टा स्टेटमेंट देछि इन्फ्लेशन रिलेटेड। तो जदि अछि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 पेयर विल बी करेक्ट। व्हाई? बिकॉज एग्जामिनर जदि 2 थरो GDP देछि दैट मींस गोटे ठीक हेतो गोटे भूल हेतो, कोउटा ठीक कोउटा भूल हेटा भगवान जानନ୍ତି। जदि तमे जानि नो व्हाट इज GDP, करेक्ट नो? बट एटलीस्ट तो ए माइंड रे दियोटी 2टा फॉर एग्जांपल तमे क्वेश्चन बनौछो तो तमे जदि क्वेश्चन बनो तो ऑब्वियसली तमे देखियो ना जदि सेम स्टेटमेंट रिपीट होतो कि GDP इज नथिंग बट दिस, सेकंड इज GDP इज नथिंग बट दिस, ता माने इथरो तो गोटे ठीक हेतियो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ कि नहीं? जदि तमे देखियो से ता नेक्स्ट गोटा जोडा कि जदि सेइतरे इन्फ्लेशन हैपेंस बिकॉज़ ऑफ दिस, इन्फ्लेशन हैपेन बिकॉज़ ऑफ दिस, ता माने इथरो भी गोटे ठीक हेतियो। हाँ कि नहीं? आउ जदि तमर से तरफ बेला खराब पडितो ताले मे भी चारटा को भी ठीक हे पारे। जदि ई केस रे मु जेंदी कहली WPI CPI करेक्ट हो तो सेतरे आउ तमको भी के बोलते पारे ठीक अछि, तमे गोटे अटेम्प्ट नेलो दैट इज फाइन। ओके, बट एनीवे, बट इन रिसेंट ट्रेंड राइट, जो एथरो जो UPSC क्वेश्चन दिया वाला जो रे कि अप टू अराउंड 80% वाज लाइक पेयर राइट, तो एथिरे जदि फॉर एग्जांपल सेही माने सिलेक्ट हे जाई परिबे जो माने जस्ट तुक्का मारिबे, करेक्ट नो? विदाउट नॉलेज आल्सो दे कैन जस्ट राइट। ओके, तो सेटा भी गोटे इश्यू थिला, बट एनीवे इट्स फाइन। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, with reference to liberalizations, right, consider the following statement: the share of manufacturing sector gross domestic product saw a consistency rise. So the GDP got raised consistently. So consistent rise तो नथिला, and obviously ए भले आसीओ माने केबे तो GDP को तमे consistent rise करै परिबोनी। फॉर एग्जांपल आफ्टर 1991 बर्तन जो क्वेश्चन टा बनी छि बर्तन प्रेजेंट सिनेरियो तमे नबनी नबना। Yes. And तमे देखियो 2018 19 20 21 we had a V shape graph, right? Yes, sir. Corona time. कोरोना टाइम रे obviously GDP कमी जायतिला, करेक्ट? Then we studied something called base effect, माने पडुछि 11% GDP, करेक्ट नो? सो ता माने जदि तळु को खसी जी दैट मींस दिस ऑप्शन 1 is wrong, correct? Yes. Fine. So option 1 is wrong, that's why A and C are wrong. Now between B and D we need to see. So we need to directly go to this C because 2 and 4 is here and 2 and 4 is here, only third part is missing. Next, see the third one. Telecom communication sector emerged as the largest recipient of FDI. See, आप इन तो knowledge दरकार, आप इन तो मैं आउ किछ कर टेलीकॉम सेक्टर सेटा एक्चुअली सबटु अधिक मिलतले ना आउ काहा को मिलता सेटा कमे के मिलयो। Anyone? Anyone? Telecom sector सबटु अधिक मिलथिबो कि? Insurance. Service Insurance sector will be always first. Service. Correct, no? Computer sector. Digitalization, not telecom. Correct, no? Because तमे मन पका balance of payment, invisible component, service रे हमें सबटु अधिक पाउछ, correct, no? Okay, so it is not telecom sector. So even in the corona time if you will see, so service sector basically तमे भाबु न कि अधिक जो FDI FPI आसीबे होंगी नहीं से माने केते लोक अछन जो माने जियो और एयरटेल रे इन्वेस्ट करछन
हां कि नहीं एंड भाबो जदी टेलीकॉम सेक्टर बुडी भी जाई करेक्ट नो आगु भाबो केते एयरसेल थिला डोकोमो थिला एंड से बुडी गले काहे एफडीआई आस्थिले बुडी थांदे कि बंद ही थांदे कि से सेटा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर हां तो जदी ऑब्वियसली एफडीआई वगैरह आसु जंदी एंड गोटे सेक्टर को आसु जंदी ऑब्वियसली से सेक्टर ता डेवलप होबो हां कि नहीं यस सर तो बेसिकली एठी जदी टेलीकॉम दबो तो सेही अनुसार तुम चेक करो जदी जानि न ताल तुम भाबियो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट नो काहे एफडीआई आसन माने से डेवलप करिया था बट वी सॉ ए ग्रेजुअल डिक्रीज सो थर्ड इज रॉन्ग सो आंसर विल बी बी इज दैट क्लियर Yes. okay so let's see what are the other two options there was a sharp rise in the annual rate of growth of forex reserve correct liberalization hela and just the liberalization hela हां कि नहीं लिबरलाइजेशन माने कोन हला तमे बर्तन तमे अलाउ कलो प्राइवेटाइजेशन कलो फॉरेन लोकन को आगु आन नथिलो हां कि नहीं बर्तन तमे कहतो नै नै एबे हमें तो आनियो माने एफडीआई को तमे आनिबो जदी तमे एफडीआई को आनिबो तो फोरेक्स रिजर्व से माने जदी अधिक रु अधिक डॉलर लेके आसिले तो फोरेक्स रिजर्व रे डॉलर केतले अधिक होबो जेतले डॉलर रो सप्लाई मार्केट रे अधिक होबो हां कि नहीं मार्केट रे जदी डॉलर रो सप्लाई अधिक होबो आरबीआई किनिबो ना किनिबोनी डॉलर ओडा को Yes. Yes, sir. एंड जेहेतु किनिबो फोरेक्स रे अधिक रु अधिक डॉलर बढ़ी बढ़ी चलिबो Yes, sir. ओके तो आगुरु जीरो थिला सी दैट्स व्हाई दे आर कंसीडरिंग शार्प राइज आफ्टर 1991 से माने कोनथि कि शार्प राइज फ्रॉम टिल 1991 रो 2023 जाय से कोजिस देयर वाज ए शार्प राइज माने एमिति थिला सिंपल 1991 में के एफडीआई आसु नथिले बस ना एफडीआई से बढ़िला एमिति देन ताबरे कोन हला धीरे धीरे कमी थिबो या फिर बढ़ी थिबो बट एई जो 1991 रु 1992 रे जो बढ़िला दैट इज बिकॉज़ ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज दैट क्लियर The फाइन sharp price is also, sir, an extreme statement, na? तो शार्प राइज मु कहूची सेटा गोटिए ईयर पाई मु कहूची हठात ना दैट इज रिलेटेड टू दैट बेस इफेक्ट माने मु गोटे क्लास नोथि रिलेटेड टू बेस इफेक्ट कोरोना टाइम रे 2019 रे जीडीपी वाज इन नेगेटिव एंड हठात जीडीपी गोटे पॉजिटिव हे गला जोटा कि 2018 रे भी सेया थिला 2019 रे नेगेटिव थिला 2020 रे पॉजिटिव हे गला 2019 20 21 दिस इज 2021 2019 एंड दिस इज 2020 2020 रे नेगेटिव रे थिला 2021 रे हठात ना पॉजिटिव हे गला तो एठी जो शार्प इंक्रीज याकू तमे शार्प इंक्रीज को कोना ना बिकॉज़ ऑफ बेस वाज लो तो एठी बेस लो थिला काहे कि एफडीआई एपीआई आसु ही नथिले ना 1991 पूर्व तामु मना करा कि रखा थिला एंड हठात तमे कहला आसी जिवे देन आसी गले तापर तमे कहतो ठीक अछि से माने पळै जाई पारंती किंतु जो बर्तार जो इंक्रीज हबो मे बी एमिति पर जदी मु ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करिवि दिस इज 1991 राइट दिस इज 1992 93 94 जदी मु 4 वर्ष लेबी 1991 रे लेट सपोज एफडीआई 0 के आसु नथिले हठात किना मु कहली एफडीआई आसीबे इंक्रीज करिवो हां कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. देन 91 गला 92 पारे मे बी पारे 92 पारे डिक्रीज करि पारे या फिर इंक्रीज करि पारे जदी भी इंक्रीज कला बर्तन तो बेस अधिक ऑलरेडी हे जायछि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी 20 कोटी टका आसी गलानी आउ आसी मे बी 2000 आउ गोटे वर्ष रे आउ 3 कोटी आसला तो 3 कोटी आसले तार ग्राफ टाइम इति बनिबो हां कि नहीं Yes, sir. तो जो शार्प इंक्रीज हला कोडी मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ this was the slope right this is the sharp increase that's what they are talking about but if, that's why I am saying no if you go with the extreme word this also you will mark as wrong then you will only left with option C that is the correct one only kintu option third ta already wrong boli am kohuche is that clear Yes, sir. okay the last one the Gini coefficient for rural India has increased which of the following statement so basically Gini coefficient have you anyone inequality of economy correct income inequality. income inequality right? Income inequality, sir. so in rural India it has increased increase karibo na kariboni Increase korichi, sir. Rural and urban both, Yes, I sir. guess it has increased. correct so option 2 and 4 are correct hope it is clear Yes, sir. okay then next comprehensive economic partnership agreement this was related to agreement means se jo WTO or different organizations right WTO related say chapter with which of the following countries India has signed the comprehensive economic partnership agreement Singapore South Korea United
Arab Emirates, UAE, and Malaysia, Japan. बर्तमान होची 5टा कंट्री. See again, this is conceptual, not conceptual. तमे जानि थिबा दरकार कि काहा से करिछि. So we talk something related to comprehensive economic partnership agreement and cooperation agreement. होंगी नहीं? Am I right? सर ऑप्शन 1 टा में मेंशन करि परिबे कि माने कंसिस्टेंट राइज बोली काहे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे हमें से ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखिबा को मिलि छै आफ्टर 1991. हाँ किंतु तमे कोरोना रे देखो ना जेतले भारत बंद हे गला. यस सेतले कोठी मैन्युफैक्चरिंग हैला तमरो डेवलपमेंट 2020 रे जति कहू 2021 रे जति हिथिबो कि जीडीपी डिक्रीज हे गला ना तमरो that to negative GDP. सर Okay, so here we are talking about Singapore, South Korea, United Arab Emirates, and Malaysia and Japan. CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. See, the first thing you need to know what is CEPA, what is CECA, then what is European Union, EU, Economic Union, not European Union. Correct? No, you should know what is Union, then you should know Economic Union also. Segura jana achi ki. Am I audible? yes sir. Continue. Or you want me to cover that for all of you? Yes, sir. Different grouping. Revise करना आगे सेटा. सर सेपा और ईसीपीए से गुडा बता. हाँ. सर Let me see. That is related to pillar. साउथ कोरिया टा तो हबो आ बाकी ओडा मन पड़ो. साउथ साउथ कोरिया से तो ही फर्स्ट हेतला 2009 समय मनमोहन सिंह. यूएई से तो ही बाकी UAB तो अच्छी ना 2022 सर सब साउथ ईस्ट एशिया रो एटा एग्रीमेंट ए सब दियो कंट्री देई छे ऑप्शन तो देनी. Give me a second, okay? I'm just trying to find it. सर जापान से तो साउथ कोरिया से तो यूएई से तो कनाडा से तो टॉक्स रे थिला. यूई से तो अच्छी सेपा असरा हे गला एबे ही थिबो तबे सेला तो टॉक्स रे 2021 रो अच्छी 22 रे ना 2021 22 रे हे जेती सेटा. Give me a second. ग्रुपिंग गुडा टिके भल से करि दबो. ओके, ऑकस वगैरह क्वाड वगैरह when NATO NTCR, these are things we already discussed.
G7 Quad, BRICS, Ocean Pacific, Asia SEO. It will come here somewhere. Okay. Let's discuss. Okay. We'll discuss this and we'll conclude for today. And again tomorrow we'll take further questions. Okay. So if you see trade agreement or type, correct? So there are 5 types of trade agreement. Ketara? 5 types. Okay. So better I'll try to see if I have the PPT. PPT will be actually good. Instead of this PPT, you can remember. Give me a second. This is fine. This is page number 23. Pillar 3, pillar 3, pillar 3, pillar 3. Here it should come. PTA हेरिका पढ़िथिले कि PTA FTA CU EU MU एटा हाँ correct से बोला. Before FTA, we should understand free trade agreement पूर्वରୁ ସେଗୁଡା ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କୋଉଥିରେ ସ୍କୋପ କଣ ଅଛି. ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଗୁଡା ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି. And if you see the EU has the highest level of freedom, right? So Yes. that's what I want to tell you. EU रो हाईएस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अछि होते सर. Euro, EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. correct. Popular theory. World Trade Organization structure, barriers, WTO barriers, then dispute settlement. Sir, free trade agreement is a broader term than this all. No. Free trade agreement is not a broader term. There is different thing also. कि से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना से माने कहबे कि किछि गोटे प्रोडक्ट सहित हम एग्रीमेंट करबो आ किछि सहित करबो ना. फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया. Yes sir. SEPA और SECA CACA और CAP are broader, more comprehensive than FTA. But SECA रे भी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसुची ना. हां दी टांग रासो सेही थे मु कहू तार क्लैरिटी पाई. Only SECA रे only tariff रो reduction कथा आसीयो only. Okay. So this is what we are going to talk about. Okay, fine. So for some time, please focus on the PPT. Okay, what we are going to discuss. So this is much more important. Okay, and through this also you can able to see some other international relationship वाला जो question वगैरह था कि कोठी कौन country আছে कौन जेगुड़ा ଟିକେ जानिया पे. So the trade agreement types. Okay, so there are basically 5 type of trade agreement. कितना? 5टा. 5. So the first one is called partial. So partial in the sense, partial scope of agreement in the sense, को गोटे प्रोडक्ट रे तमे कहछो कि भाई ठीक अछि ए गोटी को प्रोडक्ट रे आमे कोन करिवु एग्रीमेंट करिवु कि तमो भी एथिरे फ्री करो माने तम पय आमे कोन फास्ट तो जानिया दरकार फ्री माने कोन गोटे जिंस वर्तन कहउची इंपोर्ट करिवो आ गोटे कंट्री कहउची एक्सपोर्ट करिवो. करेक्ट नो. तो एक्सपोर्ट गोटे कंट्री सेते बेले करि परिवो जेतेले अलग कंट्री को जोटी से एक्सपोर्ट करूची सी फ्रीली ताको एक्सेप्ट करूथवा दरकार. सेतिरे जदी अधिक इंपोर्ट लगे दबो तो से अदर कंट्री रे सी आउ एक्सपोर्ट करि परिबो कि. फॉर एग्जांपल इंडिया वर्तमान कहउची मु टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करबी चाइना को. ठीक अछि. तो इंडिया 100 टका रे गोटे जिंस को एक्सपोर्ट करिया कहउची कोठी कि चाइना को. चाइना कहबो भाई ठीक अछि तू जदी 100 टका रे पठिबो मु तोते 30% टैक्स लगेबी. ता माने चाइना मार्केट रे सेटा केते टका हिजो 130 टका. Yes. Correct. So that is related to tariff barrier. That everyone, I hope everyone you should know what is tariff barrier, what is technical barrier to trade,
non tariff barrier, Yes, sir. right? So basically वर्तमान कोन कहूची इंडिया चाइना को जिंस पठो चाइना कहूची मु बैरियर लगे देबी किंतु चाइना रो जोटा एसेंशियल जिंस थिबो से ता ऊपर कोन बेसी इंपोर्ट लगेबो कि लगेबोनी फॉर एग्जांपल इंडिया गोटे रॉ मटेरियल पठेबो चाइना को से रॉ मटेरियल आ कोठु मिलिबोनी से इंडिया रो मिलिबो तो से कहबो ठीक अछि मु ताने तो सहित एइथिरे एग्रीमेंट करबी काहे ना जिंस मो पाखरे ही नाही मो मार्केट रे ही अवेलेबल नाही बुझियो कि ना बुझियोनी Yes, sir. so जदि एमिति को गोटे प्रोडक्ट हैला दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पार्शियल स्कोप ऑफ एग्रीमेंट hope it is clear so trade between two countries for a small list of goods at reduced tariff माने जोटी तमे 5% लगोतरा बर्तन मे भी पारे तमे 3% टैरिफ लगो 100 टका रो जिंस आसुतिला तमे 5 टका टैरिफ लगोतला राइट 105 टका रे तमे मार्केट रे तमे बिकुतलो किंतु बर्तन तमे केते लगेबो रिड्यूस कर देला मे बी 3% को मे बी 2% को इवन मे बी 0% इज दैट क्लियर Yes. okay example 0% tax on import of coffee from each other for example जदि हमें कहउचे कि ग्वाटेमाला एंड बेलाइज ओके ग्वाटेमाला एंड बेलाइज नॉर्थ अमेरिका करेक्ट सो से माने को कहउ जदि ठीक अछि हमें पार्शियल एग्रीमेंट कर दउ कोन केवल कॉफी रे हमें 0% ट्रेड लगे दउ आउ जो जिंस तमे पठेबो एठी हमें जेमिति इंपोर्ट रे टैरिफ लगे कथा 10% हो कि 5% हो कि 7% सेटा हमें रखिबो किंतु केवल कॉफी पई हमें 0 कर दउ इज दैट क्लियर ता माने कोन पार्शियल स्कोप ऑफ एग्रीमेंट रे मात्र गोटे जिंस कवर होउची या फिर दी चारटा जिंस कवर हो होप इट इज क्लियर Yes. okay after partial scope of agreement there is something called free trade agreement kona or PTA that is called preferential trade agreement तो जो माने यार मेंबर हेबे मेंबर इन द सेंस लेट्स सपोज से माने दीटा को कंट्री परंती बायलैटरल रिलेशनशिप बायलैटरल ग्रुपिंग और इट कैन बी मल्टीलैटरल ग्रुपिंग और इट कैन बी रीजनल ग्रुपिंग होंगी नहीं सी different types of grouping also is okay. It can be bilateral means only two countries will be involved. Let's suppose India China bilateral agreement होंगे नहीं but जदि हमें कहबा SAARC is it bilateral Multilateral. is it multilateral No, sir, regional. it is regional Regional, sir. because South Asian countries right okay so that is regional so European Union is it multilateral or regional regional okay so here what we are saying free trade agreement preferential trade agreement so member जो माने यार member अछली for example भाबिनियो मु वर्तमान कहूची क्वाड is it multilateral No, sir. No. it is not regional because It is multilateral. regional? Multilateral, sir. correct तो बेसिकली आपको जदि तमे देखबो एटा इंडो पैसिफिक वाला कंट्री गोडा करेक्ट नो Yes, sir. पैसिफिक एठी यूएसए एठी ऑस्ट्रेलिया एठी जापान एठी इंडिया एठी करेक्ट नो इंडो पैसिफिक रीजन रो कंट्री एंड से माने काहे क्रिएट करछन एक्चुअली मु जेतला आज इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढुतली सेतले मजा लागुतला पढिया पे कि बेसिकली चाइना को काउंटर करिया पे बट किछि दरकार नै से सबरे बट एनीवे फाइन we won't go to that part so what I am saying is for example क्वाड रे चार जण मेंबर अछंती तो से माने कोन कहले से जो चारि जण मेंबर से माने जेतले फ्री ट्रेड करिवे निज निज भितरे से माने कहउछंती एई जिंस ओडा को आम निज भितरे हमें लो टैरिफ रे बिकिउ बुझिलानी किंतु आउ जदि अदलगा केही आसीले आम चारि जण व्यतीत से माने ताकू टैरिफ हमें केते लगेबो 10% बुझिलानी Yes, sir. ता माने कोन जदि इंडिया गोटे ग्रुप रे थिबो ताले इंडिया जदि एक्सपोर्ट करिया को चाहिबो जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को से माने कहउछंती कि ठीक अछि तमे जेहेतु तमे आम क्वाड रो मेंबर तुमको हमें केते 2% समस्त कहि देबे कि जे जोठी कि जो जिंस दबो फॉर एग्जांपल इंडिया दोछि कोन टेक्सटाइल तो इंडिया जदि टेक्सटाइल जापान को दबो इंडिया जदि टेक्सटाइल यूएस को दबो इंडिया जदि टेक्सटाइल ऑस्ट्रेलिया को दबो से माने कहउछंती 2% हमें कोन लगेबो टैरिफ किंतु जदि टेक्सटाइल आसिला लंडन रो ताले एठु हमें 10% टैरिफ लगेबो ता माने कोन लंडन रो टेक्सटाइल आउ बिकी परिबो कि से बिकॉज़ ऑफ ग्रुपिज्म एटलीस्ट एक क्वाड ग्रुप रे बिकला तो ताऊ कष्ट हबो होंगे नहीं correct so if FTA free trade agreement for very small list of product but it will be more than that partial scope agreement okay so interim early harvest agreement depending on the number of participants bilateral it can be multilateral it can be regional or it can be global like WTO okay if countries go further beyond just lower tariff to deeper level and integration then we will talk about custom union then common market then we will talk about Europe sorry not European Union economic union कौन कहली
custom union, common market, economic union. These three things. We'll see what are the basic difference in between those three. Is that clear? Free trade agreement जो माने अछंती ग्रुपिज्म रे से माने कहउछन कि आमो भितरे आमे लो टैरिफ रखिबू एंड जो माने हमर मेंबर नुह से माने जदी आमो पाखु इंपोर्ट करिया पे चाहिबे आमे जदी तांको इंपोर्ट करिवो ताल तांको पई हाई टैरिफ रखिबू. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so FTA with deeper level of integration. FTA रो जदी तमे देखियो deeper level of integration, then comes into picture SEPA, SECTA and CESPA and ECTA. Okay, so what exactly all those? Let's see. So SEPA is nothing but economic partnership agreement. Kono partnership. Then there is something called SECA, that is cooperation agreement, comprehensive economic cooperation agreement. Is that clear? Then there is CECPA, that is called comprehensive economic cooperation and partnership. Bujhila na bujhila ni? Cooperation and partnership. And there is the last one is called ECTA, economic cooperation and agreement. So SEPA is more comprehensive than SECA. तो एठी तमे कहउछ पार्टनरशिप हमें करिवो and सेठी तमे कहउछ केवल cooperation. Okay, so we will see one by one. So बर्तन तम सेपा रे तमे कोन कहउछ? सेपा जोतिर तमे पार्टनरशिप करूछ तमे कहउछ इबिन हमें टैक्स, एफडीआई आ वीजा एथिरे हमें फ्री करिवो. बेसी टैक्स हमें लदिबुनु, इंपोर्ट रे जो कस्टम ड्यूटी सेटा हमें लदिबुनु. एफडीआई मानु हमें फ्रीली अवेलेबल करिवो कि आगुरु हमें मे भी कहता पारु कि हमें एफडीआई को अलाउ करिवुनु, बर्तन हमें एफडीआई को भी अलाउ करिवो. जो वीजा से वीजा रे क्लियरेंस बहुत जल्दी दबु. ई कॉमर्स वगैरह रूल ऑफ ओरिजिन, गोटे रूल ऑफ ओरिजिन, एनीवन नो व्हाट इज रूल ऑफ ओरिजिन? मने पडुची गोटे एग्जांपल हमें दउतले चाइना ट्राइंग टू करेक्ट नो हमें चीप आको देकी श्रीलंका देकी किनुतला. सो श्रीलंका सहित हमर बायलैटरल एग्रीमेंट थिला कि श्रीलंका को कहले तमे जदी हमकु इंक प्रोवाइड करियो तमकु हेल्प करिया पे हमें कोन करिवो तम इंक ऊपर हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेउनु. तो चाइना कहबो अच्छा मते गोटे रूट मिली गला मु कोन करबी मो प्रोडक्ट रे फॉर एग्जांपल श्रीलंका रो इंक जदी 100 टका आस्ती हमें 2% इंपोर्ट ड्यूटी लगोते तो 100 टका रे हमें कहते श्रीलंका रो इंक आम मार्केट रे अवेलेबल हो. किंतु जदी चाइना पठेबो हमें 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगो तो चाइना रो जिंस 110 टका पड़िबो. तो चाइना तमन बिकी परिबोनी हां कि नै? तो चाइना कोन करबो थ्रू श्रीलंका से वर्तन इंडिया मार्केट को अलाउ करबो. तो एथिरे हमें कोन कहले कि भाई नाइ नाइ हमें हमको एटा चेक करिया पड़ो तार कंट्री ऑफ ओरिजिन कोन एति की मिनिमम परसेंट तम कंट्री रे मैन्युफैक्चर हेता दरकार, प्रोडक्शन तम कंट्री रे हेता दरकार. हां कि नै? से सब जिंस हमें कहले कंट्री ऑफ ओरिजिन. तो बेसिकली ए जो कंट्री ऑफ ओरिजिन आ ऊपर सेति की हमें चेक चेक करिवनु. ई कॉमर्स रिलेटेड से ता ऊपर भी एते हमें फोकस करिवनु. सो इफ यू सी partnership agreement, it is better, means giving more degree of freedom than the cooperation agreement. Is that clear? Comprehensive economic partnership agreement have more features, more degree of freedom in terms of trade than the comprehensive economic cooperation agreement. See, तमे को cooperation and गोटे partner, तो partner सहित तमे भल से डील करो. See, husband wife, they are doing a cooperation or partner? Partner, sir. Partner, then cooperation is a part, right? कि ठीक अछि मिसी की ठीक रोसई कर दवा या फिर झाड़ू कर दवा, that is different, but cooperation भी ठीक से चलिबो करेक्ट नो झाड़ू वगैरह रे. हां तमे करले ठीक अछि right, but partner first thing is their partner, right? That means more degree of freedom. See, I'm bachelor, so I don't know exactly, but this is what I heard. Okay, from different perspectives. But anyway, so what I'm saying is comprehensive economic partnership. So partnership is better, which has more degree of freedom. You can share anything you want, correct? No, with your partner, not to the cooperation. Right? So through that you can just understand CEPA, P for partnership, C for cooperation. So CEPA has more degree of freedom in terms of tax, FDI, visa, and CECA has less degree of freedom in terms of tax, FDI, visa. Hope it is clear. And these two things are not required for timing. Okay, so the next level is called custom union. Okay, so custom union kon ଟିକେ देखिदवा rule of origin is गोड़ा सब कहि देथली. चलो, yeah, so next is custom union. PSA, partial scope agreement. गोटे प्रोडक्ट ऊपर हम कहू गोटे एग्रीमेंट करिया. होप इट इज क्लियर.
FTA, Yes. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? कि हमें प्रिफरेंस दबु को मानू जो माने हम मेंबर से मानू हमें प्रिफरेंस दबु आ वाले मानू मेंबर को प्रिफरेंस दबुनु। इज दैट क्लियर? ओके। कस्टम यूनियन व्हिच हैज लिटिल मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम देन द FTA और PTA, सेठी कोन कहू ना इट इज FTA, again it has to be, see PSA is nothing but one type of FTA only, correct? No, किंतु FTA रे हमें कहू कि आम जो प्रिफरेंस काहा को हमें प्रिफरेंस दबो एठी FTA कैन बी बायलैटरल होंगी नहीं। अब PSA रे हमें कोन कहउतले बायलैटरल वाला एग्रीमेंट होतला ना, कॉफी बेलाइज एंड ग्वाटेमाला से मने पडुला मने पडले गुडा। Yes sir. Correct. So that means PSA is subset of FTA. So similarly FTA will be also subset of custom union. So custom union रे कोन होची ना FTA in which members apply a common external tariff for all the non-members. Example Caribbean community, CARICOM. Every member nation will charge 10% import tax. Every non-member nation charge only 5% import tax on member nation. तो बर्तमान एथिरे कोन होतला FTA रे तमे कहउतला कि आमे निज पई ठीक रे रखियो किंतु सेठी तमे काहा एग्रीमेंट रे जाउ नथलो। सी कस्टम यूनियन भाबिने ऑटो वाला को यूनियन, ठीक अछि? तो ऑटो वाला गोटे रेट प्रिपेयर कर देबे कि भाई ऑटो वाला लोक जदी आसीबो, ऑटो वाला फॉर एग्जांपल मो ऑटो आज अवेलेबल नाही किंतु मोर की गोटे रिलेटिव जाउछनी, देन मु कहबी कि आउ मोर से यूनियन राउ जण भाई को, करेक्ट? नो, ऑटो यूनियन वाला का कहबी कि भाई टिके छाडी दियो। देन जोडी 2 किलोमीटर को से माने बाहर लोकटो को मिनिमम वेज 40 टका नउतले, एठी केते टका नेबे? 40 टका नेबे कि obviously कम नेबे ना, 20 टका नै पारंदी, मे बी 10 टका नै पारंदी, डिपेंड। So basically एठी तमे कोन कहउछ कस्टम यूनियन इट इज ए फ्री टाइप ऑफ FTA, बट FTA रे जो चारिटा नेशन थिला से माने कहउतिले आम चारि जणक भीतर आमे केते फ्री ट्रेड रखियो, किंतु बाहर जो माने आसीले सेटा किए को कंट्री केते ता सहित रखिबो ता ऊपर कोन छै आमे कंडीशन दउ नथिले। बुझिला ना? बुझिलानी? Yes, sir. एठी माने यूनियन तयारी कर देले, ए माने बाहर लोक ऊपर भी कंडीशन देले कि भाई जो भी बाहर लोक आसीबो सब कंट्री जो माने भी ए एग्रीमेंट रचन जो माने भी हम यूनियन रचन समस्त ताटू 40 टका हे से जी भी आसु बाहर रो जी भी आसु ताटू 40 टका नबो। तमे कहि परिबोनी जे 30 टका, फॉर एग्जांपल गोटे लोक कहबो 30 टका, ता माने कोन से यूनियन रो अगेंस्ट रे गला ऑटो यूनियन भाबिने 5 टा ऑटो ठिया हेछि, तमे जाई पचारिबो समस्त केते टका कहबे तुमको जिया 40 टका, हठात जणे कहबो 30 टका नै ताको यूनियन रे रखिबे। But sir FTA रे जो थरे की रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर हे जिवो, किंतु कस्टम्स यूनियन ने पूरा पूरी ऑल ट्रेड बैरियर्स का एलिमिनेट होपन। इटा ओटे FTA और CU रो मेजर डिफरेंस। करेक्ट। सेठी कॉमन पॉलिसी नै जिवे कस्टम यूनियन ने नॉन मेंबर कंट्री पई मध्ये कॉमन पॉलिसी जेमति कि आपण कहउतले 10% हमें टैरिफ पकेवा सब अदर नॉन मेंबर कंट्री एठी के पकेबो, एठी डिपेंड करे यस FTA रे किंतु नॉन मेंबर कंट्री सहित जो माने मेंबर कंट्री तांकर से जहा इच्छा से अनुसार टैरिफ पकेबे। बट किंतु ट्रेड बैरियर टा कस्टम यूनियन ने रहिबो, किंतु FTA रे किंतु ट्रेड बैरियर रहिबोनी। हां, काहे ना से माने चाहिले छाडी देबी पारंदी। फॉर एग्जांपल Yes, sir. हमें तो Yes, sir. कहिले ना इंग्लैंड फॉर एग्जांपल क्वाड इंडिया विथ इंग्लैंड, इंग्लैंड इंडिया रे केते परसेंट टैरिफ बैरियर दबा हेडा इंडिया डिसाइड करबो ना। यस सर। इंडिया ताहले ता सहित गोटे जाय कि एक्स्ट्रा एग्रीमेंट कर दे पारे, बायलैटरल एग्रीमेंट, पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट जो से कहबो कि भाई इंडिया और इंग्लैंड से गोटे ट्रेड एग्रीमेंट कर देबे कि हमें तमरो हमर फ्री कर दो। किंतु जदी से यूनियन भीतर थिबो आउ से जाय कि गोटे पार्शियल एग्रीमेंट भलिया करि परिबो कि 0%, कहीं ना ऑलरेडी लागी जाय ना कि आउ तमरो आउ माने से जो तमरो इंडिपेंडेंस एटा खत्म होइबो। फॉर एग्जांपल एना ऑटो वाला जो आछता। यस सर, सेथि पे सर जेतले ब्रेक्जिट ही जाईची सेथि पे इंडिया नाउ ब्रिटेन सहित चलैची फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिया पे। करेक्ट। आगुरो से माने जेतु यूरोपियन यूनियन थिले सेते बेला अलगा टाइप रो चलतला, जेतु ये इंडिविजुअल ही जाईची आर पेयरिंग का सहित नाही। सो इंडिया बर्त यस सर जोटा करूनी ब्रिटेन एबे माने बहुत थरा इंडिया माने प्रेशर कलानी किंतु हेई परुनी जोटा करेक्ट बारंबार न्यूज रे भी थिबो एटा। सो any doubt in custom union? Sir, Yes, can this be concluded that for the custom union to come into existence, there has to be a FTA or RTA signed earlier? FTA Because or RTA जब भी
हाँ यदि दुईटा member countries FTA की RTA sign करी नथिबे then they can't sign a custom union or a CET, right? Like How it lead to? I didn't get that. so suppose there is a multilateral organization which is signing a treat like FTA or something like that. Let's But suppose Quad, they signed FTA. yes, sir. They signed FTA. So suppose India is not signing something like that, can it sign a custom union or can it sign a common external tariff with non-members? Matlab, like what I want to say is without FTA, custom union cannot come into existence, right? No, Without not possible. No. Habani, sir. FTA ना ना basic, सर एटा हबनी see, that's what we are saying. No, this FTA is part of custom union. That means there should be some foreign trade agreement. Free trade agreement, not foreign trade agreement. There has to be some free trade agreement. Then you go to custom union. For example, auto wala. तो सी कौन कहीदेव कि नहीं तुम घर वाला लोक जब आउ गोटे ऑटो लोक आसला ऑटो वाला तांकर किसी घर लोक आसिले देन सेठी तुम कहीदेव कि नहीं मु तांको नेबिनी बोली तुम नबाको बाध्य दैट टू लेस अमाउंट Right. करेक्ट सो बट कथा sir meaning sir meaning custom union is a subset of free trade agreement. free trade agreement is a subset of custom union. That's what I am saying. It is on top. So the custom union is top, then under it free trade agreement. Correct. See, say that Okay. na free trade agreement re jone chahle partial scope agreement kari paribo. India, England. If India is part of Quad, India, England सहित जाइकी गोटे free trade agreement कर दबो कि partial scope agreement कि भाई इंग्लैंड तमे जदि हमकु दबो फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल आम टेक्सटाइल तमे जीरो रे नियो तम टेक्सटाइल हमकु जीरो रे दियो बट जदि इंडिया कस्टम यूनियन को पळेबो देन आउ इंग्लैंड सहित से कथा कर परिबो कि जो आमे 0% कथा कहउतले सेटा कर परिबो काहे कि ना ऑल नॉन मेंबर विल इंपोज 10% टैरिफ बुझेला ना बुझेला निज भितरे फ्री ट्रेड जोटा से माने कहउछन कि 5% रखिबो कि कोथरे आमे छाडी दबो सेथिरे तमे साइन गोटे दिन रे न कले भी चलियो फॉर एग्जांपल इन क्वाड we are talking about free trade but with Australia we are not signing for the dairy products because of the dairy products asila that might be political reason that might be private protectionism okay that to different sector we don't have to talk about but what I am saying is even in the FTA it is not necessary that we have to sign all the FTA related products for example Australia ka our dairy product bhi tame sign karo then that depends upon us whether we will sign or we will not sign. Is that clear? ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପିଜିଂ ଭିତରେ ହିଁ ଡିସାଇଡଟା ହବ तो कस्टम यूनियन रे कथा सीधी हम कहूची ना वर्तमान भाबे क्वाड रे इंडिया आसुची इंडिया वर्तमान इंग्लैंड सहित जदि तमे कहउछ केवल एफटीए इंडिया इंग्लैंड सहित इंडिया पाखरे फ्रीडम अछि कि इंग्लैंड सहित से कथा हे परबो कि मु तम सहित कोउथिरे जदि चाहिबे 0% ट्रेड करबे किंतु जदि यूनियन को पसिगला यूनियन रे केते जण अछन भाबिनो सीयू नाउ क्वाड इज सीयू लेट्स सपोज हम कहले हम कस्टम यूनियन ताले निज चारिटा छाडी देला परे से अलग अलग नॉन जेति की कंट्री रे ताको ऊपर चान कहते से माने आबी इलेक्शन रे 10% मिनिमम टैरिफ तो आउ तमे जाई कि एगेंस्ट रे जाई परबो यूनियन एगेंस्ट कि नाही इंग्लैंड से तमर भलो रिलेशन अछि मु ताऊ कहबी कि नाही तार को गोटे जिंस मु फ्री ट्रेड रे कर देबी पीएस रे कर देबी ना कर परबो बुझिला yes sir it is giving one extra restrictions that's it. Sir, yes, sir, but it is a subset only if we consider the degree of freedom in trade. But when it is considered that one has to sign a treaty or not, then it has to start from PSA and then move upwards, right? I will say instead of degree of freedom, you can think of degree of relations. Correct? No, the Okay, sir. that respect to the relation. Basically, it is almost respect those. Correct? No, कि आम भीतर जो understanding and relation, सेटा होची easy. Instead of degree of freedom, you can use the word called relationship to strong करा होची. Correct? Yes, sir. Okay. Then there is something called common market. So whenever we are talking about common market, basically we are saying movement of workers or laborers from one country to other country, that too without any restrictions. Means जे मानकर visa clearance बहुत जल्दी दियो. बुझिला ना? When I am saying common market, it is again custom union. See, that's what. If you try to remember this will make the life easy. EU, CM, CU, FTA, PSA. So PSA subset of FTA, FTA subset of custom union. Again, custom union is subset of common market. So in common market, it is again custom union.
टैक्स तमे डिक्रीज कलो इंपोर्ट यूनियन जो माने तमे जदी फॉर एग्जांपल अगेन क्वाड इफ यू टॉक क्वाड इज ए कॉमन मार्केट राइट factors of production capital and labor can move freely amongst the member means तमे वर्तमान कहउछ इंडिया रो जदी जने चाहूची काम करिया को जाय कि ऑस्ट्रेलिया रे ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट ask lot of restrictions कि नहीं तम वीजा में 2 मास पय दबु कि 3 मास पय दबु नो देयर हैज टू बी फ्री एग्रीमेंट कि चलो जने आराम से वीजा तार क्लियरेंस दियो एंड ताको काम करिया को दियो capital as well as labor is that clear previously in custom union we are talking about only capital पैसा वगैरह राइट एफडीए एफपीए एफपीआई एफडीआई से मानक कथा कहउथे वर्तमान हम कहते कैपिटल as well as labor transport भी तमे करबो that too less visa clearance बहुत फास्ट दबो so is the norm on FDI currency convertibility and visa is that clear Yes. that is called common market so South America रो Mercosur so that is called common market तो से माने को करते साउथ अमेरिका रे अर्जेंटीना रो तमे जाओ ब्राजील रो जाओ पेरू रो जाओ बोलिविया easy norms FDI FPI currency convertibility see yesterday also I took a session related to currency convertibility current account currency convertibility is 100% while capital account currency convertibility restrictions hongi nahi yes sir so those things will be easy in common market hope it is clear and what is the difference between EU and the common market so EU is nothing but economic union okay so common market again it is common market where member country keep common currency and common tariff on import and export that's European Union common currency euro but England ठीक अछि से तारा पाउंड लेकी चली छी but generally से माने कोन करथि ओटे common currency नियंती that is euro correct allow entry of goods services capital and labor everything among themselves with minimum restrictions fiscal policy and diplomatic policy through a common parliament monetary policy through a common central bank example European Union is that clear Yes, sir. okay so now if I want to conclude I will say for this agreement types of agreement right so we talked about 5 things first one PSA correct then with free trade agreement or preferential trade agreement which has basically two CE cooperation agreement CECA and CPA. PA correct partnership agreement correct so this is having more weightage means more degree of relationship basically तमे को कि ट्रस्ट वगैरह रिलेशनशिप रे बेटर रहबो कोथरे जदी पार्टनरशिप जदी हमें टैक्स कथा कहउतले सब्सिडी नॉट सब्सिडी दैट इज एफडीआई एफपीआई वीजा ये सब नॉन थोड़ा एथिरे इजी रहइबो कोठी सीईपीए रे देन आफ्टर एफटीए देयर इज कस्टम यूनियन करेक्ट नो आफ्टर कस्टम यूनियन देयर इज कॉमन मार्केट एंड आफ्टर कॉमन मार्केट इकोनॉमिक गोटे सेंट्रल बैंक जे कि डिसाइड करिवो कि फिस्कल पॉलिसी कोन वगैरह करियार अछि नॉट फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह फिस्कल पॉलिसी तो गोटे पार्लियामेंट करो कॉमन करेंसी एंड दिस इज नथिंग बट ए कॉमन मार्केट करेक्ट जो थी लेबर वगैरह फ्री ट्रेड ही पारुथि लेबर माने आराम से तांको नॉर्म्स दियो कि लेबर गुड्स सर्विस इफ यू टॉक अबाउट यू गुड्स सर्विस लेबर एंड कैपिटल हैव टू मूव वेरी फ्रीली विथ लेस और मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस होंगे नहीं then there is common market जोटा already कथा हेतले common union any doubt in this 5 clear right so the biggest and the stronger part is the economic union biggest and stronger part with respect to what so with respect to yes trade relationship हां रिलेशन economic relationship तमर कोन गोटा असुविधा हो बर्तन तमर इकोनॉमिक यूनियन यूरोपियन यूनियन 20 टा लोक तम सहित अछंदी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हला 20 टा लोक आसीयो सहाय्य कर दो या फिर तमर sir any challenges to that का इकोनॉमिक यूनियन को yes sir because sir only benefit there should be some challenges see challenges तो बना फॉर एग्जांपल माने जतले इकोनॉमिक यूनियन बनेबे देयर विल बी सम अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल आउ जने भाबिनियो क्वाड रे एफटीए बनाउची ठीक अछि ऑस्ट्रेलिया तो इकोनॉमिक यूनियन रो पार्ट रे नो तो ठीक अछि एमाने केवल निजो कंट्री भीतर बिकि देबे आ कोन सबु तक रिसोर्स तांको पाखरे अछि कि रिसोर्स तो एशिया पाखरे अछि रिसोर्स तो अफ्रीका पाखरे सब अधिक अछि अफ्रीका सहित से कोन करिवे अफ्रीका जदी सी गोटे एफटीए बनै देला जदी अफ्रीका पळेला कस्टम यूनियन रे
से माने जदी कस्टम यूनियन तयारी कले अफ्रीका रे से माने कहे बाहर जे भी आसीबो इंडिया आसु चाइना आसु पाकिस्तान आसु जे भी आसीबो ता ऊपर हमें 10% इंपोर्ट करिवु एक्सपोर्ट रे भी ताको हमें दबुनु जिंस बुझि परलो ना बुझि परलो किंतु एठी कोन माने रिलेशनशिप बनौचंदी तो ठीक अछि से मानको निज कंट्री भितरे तांको पाखरे तो सब तक रिसोर्स नथिबो ना होंगे नहीं फॉर एग्जांपल बिजली Yes, sir. एंड से माने आसुचंदी टेम्परेट जोन पुरकु करेक्ट एंड सेठी बर्तन सोलार थिबो कि No, sir. देखिबो से माने त आसी जिवे लगभग 30 डिग्री से पडकु सूर्य से पडकु जीवनी देन सोलार रे एनर्जी तांको बहुत मिलिबनी एंड से माने वेट करिवे काहा को इंडिया अफ्रीका जो माने अधिक सोलार एनर्जी को प्रोड्यूस करूथिबे एंड इंडिया कहो भाई तुम तो कस्टम यूनियन या फिर तुम तो इकोनॉमिक यूनियन करेक्ट आम क्वाड अछि क्वाड रे हम कथा कि आम जहा को बिकिबु ताको एतिकी रे ही बिकिबु बुझि परलो तो एई जे से माने भी जदी किछो ट्रेड करिया चाहू इंडिया कौन करिवो ऑलरेडी जदी एफटीए रे एग्रीमेंट करथिबे या फिर कस्टम यूनियन रे जदी इंडिया एग्रीमेंट करथिबो कि बाहर रो जे भी आसीबो ताको तमे 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगेबो ए माने ए जो यूरोपियन यूनियन रे जो माने अछन से माने एशिया रो जो कंट्री अछि तांको सहित बिकला 10% लागि जिवो तांको तेनो तांको सेपरेटली जाई कि से माने एग्रीमेंट भी करि परबे सी बायलैटरल एग्रीमेंट भी करि परबे एमिति रहो कि कस्टम यूनियन रहि गलो करेक्ट इकोनॉमिक यूनियन रहि गलो ऑब्वियसली देयर विल बी इश्यू कि तमे बाहर को जाई कि एठी काहे ना ऑलरेडी हमें कथा कहि गले ना कस्टम यूनियन माने बाहर कंट्री पई तमे ऑलरेडी रखि दबो कि 10% तमे लगाया को ही पड़िबो तो ब्री एग्जिट मार्केट रे अछि करंट अफेयर वाला न्यूज़ पेपर में तो मिल जिवो ब्रिटेन एग्जिट जो देंगे इंडिया वाला ट्राई करिया पे रिलेशनशिप विद ब्रिटेन the major sir mane major repercussion of integration and economic for foreign trade the developing countries mane more dependent on the developed nation is the depressed regions बहुत सारा create हो एटा गोटे बड़ा रीजन ही परिबो राइट आ सर हमें माने मेंबर कंट्री माने जो माने की रेस्ट्रिक्टेड हेबे by their regulations but the non member country man to restricted हो ना देना कोट ना कोटी से माने अदर सहित जाई की भी से माने को इकोनॉमिक कंडीशन yes sir सेटा ही दीटा मेजर डिसएडवांटेजेस हे करियो ओके एनीथिंग एल्स सर सीएम आउ ईयू डिफरेंस ଟିକେ सीएम आउ यू ये सर सी यू रे तम कहतो ना कॉमन करेंसी भी तमरो कॉमन थिबो पॉलिसी वगैरह ना भाई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह तमरो पार्लियामेंट गोटे फिस्कल पॉलिसी में पार्लियामेंट गोटे थिबो जो धीरे तमे पूरा कहो पूरा यूरोपियन यूनियन रो वर्तमान हमें डेवलप करिया को चाहू फिस्कल पॉलिसी ऑलरेडी नो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी राइट टैक्सेशन वगैरह कोन हो कोन नहीं बिकॉज़ कॉमन करेंसी अछि दैट टू यूरो तो सेटा होची इकोनॉमिक यूनियन जोटा कि कॉमन मार्केट रे नथिबो से माने कॉमन मार्केट रे तम पाखरे माने सेम करेंसी नथिबो मे बी डिफरेंट करेंसी है हां के तो फ्री ट्रेड ऑफ लेबर ही पर लेबर को तमे आराम से फ्री ट्रेड करछो कैपिटल एंड लेबर से गुड सर्विस कैपिटल लेबर सब मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस सर यूरोपियन यूनियन रो इंडिविजुअल करेंसी भी रहउची सर कंट्री रो एंड कॉमन करेंसी यूरो रे हां सेही जगह कहते गोटा कॉमन करेंसी थिबो जोटा कि से माने रखि चंदी कि आकु हमें मानुछु कॉमन करेंसी बोली तो तांकर निजर भी करेंसी रहि Yes, पारे sir. फॉर एग्जांपल बर्तन इंडिया रो तमे रुपी छडा तमर पुनी अलग आसे जो कॉइन ओडा आसुची डिफरेंट कॉइन आसुची ना आसुनी कॉमोपरेटिव कॉइन्स यस यस बट सेटा तमे चलौ छ कि दैट इज डिफरेंट सो तांका पाखरे सेमिति नॉर्म्स थिबो से माने चलै परिबे या न चलै परिबे सो आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल कि चलो व्हाट इज मनी व्हाट इज फिएट मनी व्हाट इज लीगल टेंडर होप इट इज क्लियर but anyway whatever we discuss any doubt balance of payment current account deficit and we try to cover today these partnership right trade agreement सर तले just these सेपा और सेक्टर जदि हमें डिफरेंशिएट करूछंती जदि गोटे कंपैरिजन वर्जन एंड देन सेपा हैज ए वाइडर रेंज ऑफ इनक्लूसिवनेस काहे ना सेतरे गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट अछि आउ एटा स्पेसिफिकली पार्टनरशिप अछि बोली इट हैज द इक्वल वेटेज the cooperation ने सेति के वेटेज सेटा देई पारुनी इज इट ट्रू correct for example cooperation is your family correct no yes family without cooperation আছে but partner सहित husband सहित partnership ଅଛି correct no he is my partner so मोर केतले कोन ओडा सुविधा हला so जो deeper level of engagement basically these are related to deeper level of engagement not related to the freedom of trade or something basically engagement केते deeper
फैमिली रो सब मेंबर को सहित कोन तमरो एंगेजमेंट प्रॉपर होए कि डिपर तो रहबन ना हस्बैंड सहित जेति कि एंगेजमेंट डिपर रहबो फैमिली रो अदर मेंबर को सहित सेति डिपर एंगेजमेंट होबो करेक्ट नो Yes, so partnership रे तमरा we have the equal weightage with respect to anything. But cooperation is again it's like a dependent proportion कहला भले हमें whether we cooperate or we don't cooperate. करेक्ट ओके Yeah, thank you, sir. yeah thank you everyone Thank you, sir. Thank so you, sir. tomorrow morning those who are attending so tomorrow morning again 8 a.m. right I will take what we are doing that economy infrastructure right bijli we will talk about pani correct water thank you everyone Thank you so much. Good night, sir. yeah, good night. Good night.